तो हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका स्वागत है तने के टॉक्सिक नई वीडियो पे। और आज हमारे साथ मेरी एक अच्छी दोस्त शुभांशी है। और आज का टॉपिक थोड़ा सीरियस होने वाला है। तो पहले तो शुभांशी हेलो बोल दे सबको अपने स्टाइल में। Hi, this is वो Himanshi. करना जो तू वो जो तू पहले कर रही थी, Sorry. वो जो तू पहले कर रही थी वही कर दे। Okay. Hi, this is Himanshi. Hi, this is Himanshi. I don't know what I did. I completely forgot about it. Yeah, Pasha bhai ke hum dost hain. That's it. That's the only achievement I have in my life. तो जिस जिसको भी अचीवमेंट चाहिए आप सब्सक्राइब कर देना। आपसे मैं दोस्ती कर लूंगा। ऐसी दोस्ती करूंगा कि मैं आपके घर पे भी आके रहूंगा आपके साथ। इतनी गहरी दोस्ती कर लेंगे हम लोग। और शुभांशी से दोस्ती करनी हो तो वो नहीं हो पाएगी। वो सिर्फ यहीं तक सीमित है। तो सबसे पहले तो कंसिस्टेंट ना होने के लिए सॉरी बोलता हूँ मैं आप सबको। थोड़ी दिक्कतें चल रही हैं, आप देख सकते हैं हर वीडियो में मेरा बैकग्राउंड बदल जाता है। मैं कभी कहीं होता हूँ, कभी कहीं होता हूँ, तो उस वजह से मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा हूँ। लेकिन अब शायद हो जाऊँ। तो आप लोग बने रहिएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो मतलब बहुत ही सीरियस टॉपिक है। क्योंकि ये कुछ ऐसा टॉपिक है जिससे लोग जूझ तो रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि करना क्या है, उनके साथ हो क्या रहा है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए एक विक्टिम बुलाई है मैंने, जो आप सबको बता पाए कि हाँ कोई नहीं, जो आप सब लोगों को बता पाए कि कैसे ये सब चीज़ें होती हैं, क्या इन सब के इम्पैक्ट्स होते हैं, क्या मतलब क्या होता है इंसान के साथ जो ये चीज़ें फील कर रहे होते हैं। तो ये ज़्यादा अच्छे से बता पाएगी आपको। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हरासमेंट से चालू करते हैं हम लोग। तो क्या होती है हरासमेंट? Well, any kind of unwanted attention. And I know लोग कहते हैं women usually want attention and all of that. And I agree. I 100% agree ki yes, like attention looks very good, very, very good sometimes. But the unwanted kind, like how do I even explain it? It's just any kind of attention, be it catcalling, be it just people looking at you as if you are the fresh piece of meat that they have seen, touching inappropriately or without consent. A thought of just very weird remarks, like all of it's a very big umbrella जो पूरा harassment का है और उसको मैं एक sentence में I don't think I can just wrap it around a sentence and present it to you. So yeah, that would be harassment for me. It might be different for a different person, but that is mostly what I think harassment का general होता है या क्यों है या फिर definition होगी. और ये मतलब इससे सभी लोग जूझते हैं अपनी लाइफ में, जहाँ तक है मतलब मोस्टली तो जूझते ही हैं। Yes, I don't. जैसे usually जब harassment की बात होती है, people usually go for women. Like, okay, women face this. I don't think so. I think men face it equally, but they are shamed for expressing that they are facing something like this or they are not happy with this. And secondly, again, Indian law, दोनों ही victims पूरी तरीके से जूझ रहे हैं because there is no actually no law for men to complain about this. I think the only laws that men are protected under is POSH in sexual harassment, which is sexual harassment at place workplace, and second is APOSO, which is 18 के under. So apparently according to Indian government, 18 के ऊपर होते ही आदमी लोग harass नहीं हो सकते और until and unless it's someone at their work, which is abysmal, abysmal to me. Like this is so weird to think about. And yes, mostly victims are women, and mostly, and I think most of perpetrators are men, and that's why we have laws like this. But I think yes, that yeah, that लड़कियां भी करती हैं एक दूसरे को हरास।
लड़कियां देखो, द मोस्ट ऑफ द केसेस दैट आई हैव सीन, एंड बिकॉज मैं इस बारे में ज्यादा पढ़ती हूँ, ज्यादा जान रही होती हूँ, यूजुअली लड़कियां जो करती हैं, दे टारगेट टीनेजर्स, लाइक जो लड़कियां होती हैं इन देयर 20s, 30s और 40s, दे टारगेट यंग बॉयज, लाइक फ्रॉम द एजेस, एंड आई डोंट मीन एजेस, बट यूजुअली अंडर 15, 16, 17, उसके नीचे वाले बच्चों को। बिकॉज अगेन, कौन सुनेगा, कौन विश्वास करेगा? भले ही पॉस्को के अंदर दे आर प्रोटेक्टेड, बट इट्स स्टिल such a weird phenomenon, because I remember I saw this one case where a teacher was sleeping with her own, like, student, okay? And the whole comment, and I think most of the comments from men, and particularly men, I'm not even joking, were like, oh my god, dude got laid and still got the revenge, or something like that. And if we normalize stuff which is like women perpetrating or being predators, to oh, men enjoying it, it's no longer that. And I've read one more case in which a 20-year-old girl, उसका उसकी एक छोटी बहन का friend था, so they were 8 year old, and she abused him, and he could not say that or tell that to anyone, because again, men are not, and sex ed is not available in India, readily available in India, and men are not taught to, just go around with these things. I know women also don't say it. I haven't said anything when anything happened to me, but most of the time it's like you have this hole in your head कि हुआ क्या है, वो हुआ क्या है सोचते सोचते ना सालों बीत जाते हैं. Some cases, obviously not every case, because we do see some cases out there. But yes, women are also perpetrators. They are a less amount, I'll tell you that. उनकी percentage comparatively बहुत less है from males, but there are women perpetrators there. कितना परसेंटेज होगा इनकी भी, मतलब जो ओवरऑल केसेस हैं, कितने परसेंट फीमेल्स होंगे, कितने परसेंट मेल होंगे? Uh, मेरे पास एग्जैक्ट कोटा तो नहीं है. आई कैनॉट से दैट मेरे पास एग्जैक्ट नंबर होगा, बट most of them are males, so I'll say above, in the ranges of 80s to 90s there are males, and then उसके बाद females. जैसे कि अभी हमने बात करी कि टीचर और स्टूडेंट वाला केस, तो मतलब ऐसे ही मतलब काफ़ी तो लड़कियों के साथ भी होता है। तो इस चीज़ का इम्पैक्ट क्या होता है उनके दिमाग पे? I think most of the time, because our body and our mind is made in such a way, आप shut down कर जाते हो. First of all, first and foremost, what happens is you shut down and you can't really comprehend. And when you are a small child, especially if this happens to a small child, they can't comprehend. और अगर उनको they do not know any better, और उन लोगों को नहीं सिखाया गया, even सिखाया भी गया तो बहुत ही vaguely बताया गया कि होता क्या है, तो they think that it's normal, even though it's like psychologically hurting them. उन लोगों को पता ही नहीं है कि it's not normal. It's not normal. No one should do such stuff to you. And then उसके बाद ये होता है कि they buried down somewhere in their psychological brain. वो पूरी मेमोरी वाइप आउट कर देते हैं वो लोग, किस तरीके से उसको डिफरेंट डिफरेंट मेमोरीज से ओवरलैप करके. And then and uska psychological impact ये होता है that they don't trust people. They become hypersexual, which is one of the most common phenomenon in women, that if they are abused, they become hypersexual. So they start seeking sexual energies or sexual, like, look from men, women, or whatever they are into. But they start wanting it because they want to feel someone took their sexuality and abused it, so they want to take it back and use it on how they would use it. So that all of that, and yes, this is like very minimal. मैं बता रही हूँ. Some people don't want to be touched like me. I hate people touching me, especially my face. Some people fall into relationship after relationship after relationship because they want to fill that void. There's not एक दो तो मैं बता भी नहीं सकती. There is like plethora of things that happen, and it depends on कि आपका trauma कैसा गया है,
क्या केस हुआ था आपके साथ, एंड ऑल्सो पर्सन टू पर्सन कि आपका फैमिली में आपके साथ क्या कैसे होता था, लाइक सम everyone knows some families in India have a daughter and son preference of sorts. So when you have that preference, you feel like, oh my god, that person liked me, or that person showed interest in me. So that means they must be a really nice person. So वो सारी चीजें भी kind of आ जाती हैं. So yeah, it's a lot of things that happen when you go through something like that, something as traumatic as harassment or sexual harassment, to be very exact. तो इस सब के मतलब जब ये सब हो चुका होता है या जब जो विक्टिम है, उसको सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट होता है उसके लिए? क्योंकि काफ़ी सारे केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं हो पाते क्योंकि प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता है। आई थिंक बहुत सारे केसेस इसलिए नहीं रिपोर्ट हो पाते हैं क्योंकि विक्टिम्स को पता ही नहीं होता उनके साथ क्या हुआ है. एंड आई विल बी हाँ। वेरी ऑनेस्ट, हुँ, विक्टिम्स बिकॉज वी डोंट हैव अ थिंग कॉल्ड सेक्सुअल एजुकेशन इन आवर कंट्री, बिकॉज उन लोगों को लगता है कि सेक्सुअल एजुकेशन मीन्स just sex and not like protected sex or what sex is or why it should not be done with someone who is a minor and someone who like grooming is so freaking common, I tell you. Because you know, so when you were in school, I'm pretty sure there would be a few girls in your class when you were in 8th to 10th approximately जो college के लड़कों को date कर रही थी, right? Oh, I'm asking a question. हाँ, हाँ, तो मैं आंसर देता रहूँ, हाँ। हाँ, राइट, सॉरी. सो वो लोग जब तो दैट इज, अब अभी भी लगता है कि दैट इज काइंड ऑफ नॉर्मल, बट दैट इज ग्रूमिंग. हुँ, शी इज अ माइनर. अभी वी आर आउट ऑफ कॉलेज, राइट? वी आर हुँ, 20-23 ish की एज रेंज. Would you ever even think about dating someone who is in school, who is in 8th standard? नहीं, No, right? हुँ, That would be abysmal. तुम बच्चा देख रहे हो उस टाइम पे. You like this हुँ, person, oh my god, this person is like a child. Oh my god, I don't want to see this person's face. This a child, but usi time pe you see that they're dating, and that's not dating. That is grooming. That is proper, just what we call grooming. So they are taking teens who are in a vulnerable state, who are in a vulnerable position, and they're grooming them so that they can feel like important and stuff. And usse, so this is also not taught in our schools. Sexual harassment is also not taught in our schools. Bad touch, good touch is also not. I think अब जा करके bad touch, good touch थोड़ा बहुत टॉपिक आता है, थोड़ी कुछ टीचर्स, कुछ schools कर रहे हैं. Most of the times victims को पता ही नहीं होता उनके साथ क्या हुआ. एंड जब बताया जाता है तो उन लोगों को शट डाउन कर दिया जाता है बिकॉज बच्चे कहानियां बनाते हैं. दैट इज वन थिंग दैट आई हर्ड. बच्चे कहानियां बनाते हैं. शी इज डूइंग इट फॉर अटेंशन. थर्ड वुड बी, oh, she's a temptress who made a married man have ungodly thoughts. So this is the support system we apparently have in this country, and it's very sad. It's very sad. It's a sad state because instead कोई इन of सब चीज़ों के बाद झूठ क्यों बोलेगा कि ये हुआ है मेरे साथ? वो भी एक इतनी छोटी एज पे। ये लोग नहीं I सोचते हैं। don't, नहीं एक्चुअली दिक्कत इट्स मीडिया. आई टेल यू दैट. आप अगर 90s की कोई भी मूवी उठा लो, विथ 90s नॉट लाइक 80s 70s की कोई भी मूवी उठा लो, every single time you see a woman or a villain, they would be raping someone. Like I'm not even kidding. तो कोई आप कोई भी movie उठा लो, be it any movie, and that has normalized it to such an extent. And actually, I'll tell you this. I have read this somewhere. Ki some woman said ki by your definition of harassment, every single person in my life has been harassed, or every single woman has been harassed. I'm like, and then there was this line, niche, oh my god, you're so like close to the point. Yes, 98%. That is the percentage that has been quoted. 98% of women have faced sexual harassment sometime in their life. It is a big number. It was 97 a few years ago, I believe. 5 or 10 years ago, it was 97. Now it's 98. तो मतलब ये तो सारा ही हो गया ना 98% मतलब लगभग सारी फीमेल्स
almost sari. And the thing is that it's not. I don't think it's because people don't believe in women. I think it's more because they don't want to believe in them. क्योंकि सारी सारी इज्जत तो लड़की की लड़की के हाथ में है, खानदान की. So if something happens to her, oh my god, something happened to the girl in my family. She's never gonna get married. She's gonna be a burden to me all my life. So it's better to just shut it out. And I'm so confused. Ki, okay, you know that this has happened. You know your daughter has told that to you, and still bring that man around in your house and you say your daughter to cover up instead of not having that. ठीक है, तुम नहीं भी विश्वास कर रहे हो, मतलब तुम ये विश्वास कर रहे हो कि कुछ हुआ है, पर तुम ये नहीं, कुछ कारण नहीं करना चाहते. You don't want to make a big deal out of it. It is a big deal, but you don't want to make a big deal out of it, thanks to society. But you should not let your like child or any child near that man, right? उस point के बाद, and it's so wild to me that उसके बाद वो लोग उसको खाने पे बुला रहे हैं. So wild. So और yeah, सोशल apparently, मीडिया भी इन सब चीज़ों yeah. को ऐसे प्रमोट करता है कि इफ अ रेपिस्ट कैन वेयर क्लोथ्स व्हाई नॉट गर्ल्स। ये मैंने खुद देखी थी कहीं पोस्ट। This can also be like, same logic. They kill the woman anyways. I think अगर clothes की बात होती ना तो सबसे ज्यादा रेप इंडिया में नहीं हो रहा होता. हाँ, Very simple logic. Most of the women don't cover themselves. Most of, ठीक है. सबसे ज्यादा रेप इंडिया में नहीं हो रहा होता, पाकिस्तान में नहीं हो रहा होता, बांग्लादेश में नहीं हो रहा होता, क्या नाम है, लाइक अरब कंट्रीज में नहीं हो रहा होता. इफ द क्लोथिंग was an issue, let's be very real about it. कपड़ों की दिक्कत है ही नहीं, कपड़ों की दिक्कत कभी थी भी नहीं. प्रॉब्लम ये है कि दे नेवर वांट टू क्वेश्चन द मैन और दे नेवर वांट टू क्वेश्चन द गाय हु रेप्ड. Because that is, and I remember I saw this one Sweden ka, I think issue tha. This man was a gynecologist, studying to be a gynecologist, and he raped a woman. And court may dismissed it, saying that okay, he did a mistake, but he has such a like he's such a bright man and he has such a good life ahead. We should not क्या नाम है, take away that opportunity of him being a nice person. And Childline, it's a destructive woman's life. You are और gonna be तो a gynecologist. How any woman is gonna be safe near you? वही। You see, you see the hypocrisy. It was so much fun to me. I think it's mostly because it's a patriarchal mindset that women should be responsible for. Like women should not be responsible until and unless they उनके साथ कुछ हो रहा है. Like if you see patriarchal mindset नहीं है ना कि women should not interfere in money matters, should always cover up. But अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ तब भी उन्हीं की गलती है. ये तो मतलब वही है, बायसनेस है काफ़ी ज़्यादा मेल्स की तरफ। बहुत eons and eons of biasness है. It's not just 1 year or 2 year or few decades even. Eons and eons of biasness has led to this. I तो remember I read one quote in this one story from India. India की है. And I think कुछ ट्राइब थे या कुछ स्पेसिफिक किंगडम जो इंडिया में था, कुछ कुछ 100 1000 200 साल पहले. उसमें rapists would be I think tied and then stoned to death or something. कुछ something rapists would be dead by the end of it. And then women would be welcomed in the village as their own daughter if something happened to her. And I'm like, कितना पीछे चले गए हम लोग. कौन से which western tradition are they following? What the fuck? ये तो अब तो ये नहीं होती ये सब चीज़ें जो होनी चाहिए। हाँ, तो भाई बट लड़की अपना शहरी छोड़ देती है. एंड इवन चाइल्ड वाले में देयर इज दिस वन वेरी 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 फेमस केस. एंड मैंने उस केस के बारे में पढ़ा है. एंड दिस साउथ कोरिया केस है बिकॉज वहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट लॉज आर shit as fuck. ठीक है. So that was the one case कि एक
8 साल की बच्ची का रेप किया था, आई थिंक मिडल एज मैन है, आई डोंट रिमेम्बर हिज एज। इतना बुरा कि उसके इंटेस्टाइन बाहर आ गए। ओके, एंड शी कुड नॉट बी नियर अ मैन, लाइक उसके पापा को बेयर सूट पहनना पड़ रहा था जस्ट सो दैट ही कुड बी नियर हिज डॉटर। नाउ यू सी दैट केस, एंड उस बंदे को मिले थे 12 साल, और फिर वो कम होकर के 10 साल हो गए थे। एंड देन उस बंदे की इतनी ऑडेसिटी है, लेट मी टेल यू दिस, कि 10 साल निकलने के बाद ही स्टिल हैड अ वाइफ, बाय द वे ही स्टिल हैड अ वाइफ। एंड वो उसी लड़की के, लड़की इज नॉट इवन लाइक 20 एट दिस पॉइंट, ठीक है, 8 साल की थी, ऑलमोस्ट 12 साल ले लो तो फिर 20 साल की भी नहीं है वो बच्ची, ठीक है। उसी के नेबरहुड में आके रहने लगा, एंड इतना ज्यादा वो ऑलरेडी वो इतनी ट्रॉमेटाइज थी, शी मूव्ड आउट ऑफ दैट नेबर। ओह माय गॉड, एंड क्यों उसको ये इम्यूनिटी मिली थी? बिकॉज ही वाज ड्रंक। अगर आदमी ड्रंक हो तो लड़की की गलती है, अगर लड़की ड्रंक हो तो भी लड़की की गलती। गलत तो मतलब लड़की है इन सब चीज़ों में। दे जस्ट मेंस फॉलो की बात प्लेयर राइट है। इस सब से कोप और हील कैसे करें फिर? सॉरी, एक बार फिर से। इन सब चीज़ों से कोप और हील कैसे करें? आई थिंक the best way to cope with it is actually accepting the fact कि आपके साथ कुछ हुआ है, because most of the people just don't want to accept it. They just don't want to accept it because it's much more painful of a process to accept it and then heal than to just bury it in the back of their minds कि कुछ हुआ ही नहीं, छोड़ो। And accepting, अगर आपने accept कर दिया कि आपके साथ कुछ हुआ, I think half of the journey is done. Other half actually depends on the people around. So I was very lucky, मेरे माँ बाप ने देखा मुझे मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स है, एंड दे टुक मी टू अ साइकियाट्रिस्ट, सो आई वाज वेरी लकी विद दैट। आई हैव अ वेरी 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 गुड नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स, इवन माय फ्रेंड्स इन थिएटर, और ऐसे भी माय ओल्डेस्ट फ्रेंड्स, they were always there for me if I'm crying in the middle of the night 2 a.m. and I call them and I will like, I can't think straight and please help me, and they will was, so you have to just be there, listen, बिकॉज़ बहुत टाइम लगता है रो रो करके वो चीज़ें एक्सप्रेशन बाहर निकालने में, एंड ऑल्सो बहुत टाइम लगता है उसको डील करने में, एंड इट नेवर लीव्स यू, इट नेवर लीव्स यू, दैट हॉरिबल फीलिंग नेवर एवर एवर लीव्स यू। व्हाट यू हैव टू लर्न इज टू लिव विद इट, नेवर हील्स, इट्स जस्ट कि बैंडेज लगा हुआ है, एंड उस बैंडेज को बार-बार निकाल करके फिर से बैंडेज करना है जब वो बाहर निकलने लगे फिर से। So you just वही learn है how ना to कि deal वो with it. पर्सन आपको कहीं न कहीं क्या पता दिख जाए दोबारा, तो फिर अब कैसे That निकल चलेगा कोई, जब that बार-बार can चीज़ें रिपीट होंगी। that is like, so I don't go back home most of the time because of this. Because just in case, I know my parents are not going to ask them how to be there, but someone else who does not know, God, it just, and but the worst part is the audacity of these people. They will act friendly with you. They will act like कि उन्होंने आज तक जिंदगी में कुछ किया ही नहीं। I remember one of them went to fucking Mahakumbh with one of my family members and dipped and was like Bhagwan, Bhakti and all of that. I'm like, महाकुंभ को and इन्होंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया। सच में पूरा का पूरा गंगा माता को 2-3 बार और साइकिल में निकलना पड़ेगा उस गंदगी को बाहर निकालने के लिए। तो इन सब चीज़ों के बाद डिप्रेशन भी आता होगा? हाँ, that is like the byproduct of PTSD. हुँ। So for me, I think depression हर इंसान पे अलग दिखता है। The first 10 years of my life, I was able to like control it and not show it to people, and then मैं fake suicide attempts करती थी because I would like so much, I would be in so much physical emotional pain कि मुझे लगता था कुछ भी करके physical pain इतना बढ़ा लूँ कि मेरा दिमाग इधर से हट के इधर चला जाए, which is not something a 10 to 12 years should ever think about. And yeah, that was very hard time.
and I would do that. I would fake it so that मेरे दिमाग से ये लगे कि oh my god, I've tried, and then कुछ दिनों तक वो would be out of my head, and then I would try again. That would be out of my head for some time. So that, and then when I finally fell very hard into like critical criminal, clinical depression, which was I think second year of college, I believe. उस time I saw a different phase of depression, which was like I would मैं literally बता रही हूँ, this happened. I would wake up, I would not have energy to even drink water. मैं मर के एक केला पूरे दिन में खा पाती थी। मैं अगर ब्रश करने गई हूँ 4-5 बज जाते थे। सुबह 10 बजे गई हूँ ब्रश करने, 4-5 बज गए। आई डिडंट इवन नो कि 4-5 बज गए। You have no concept of time, you have no concept of food, you just wanna rot away. And this is it is such a bad time to be in college and to be in your exams, I'm telling you. Such a horrible time. Finals चल रहे थे, finals के आसपास की बात है, and I was also sick. So what happened was that I would cry all day, and then I would eat food, and I would not have energy to digest that food, so वो उल्टी हो जा रही थी, and after some time ये मेरा पूरा neck bruise हो गया था, throat पूरा, and I started coughing blood literally exam से पहले, exam के एक दिन पहले मेरे से cough cough boom. So yeah, it was not a fun time. Depression हर इंसान के लिए अलग होता है, you cannot generalize depression. किसी के लिए like suicided, I'm not a suicided, I'm not a suicided, and किसी के लिए it's like looks like laziness, किसी के लिए it looks like someone is trying too hard to be perfect, like they are like overdoing over everything. It's different for everyone, and I think everyone should get evaluated and once yearly, like we have like like health checkup नहीं होते हैं कि किडनी ठीक है, लिवर ठीक है, इसलिए दिमाग भी ठीक करने वाला, they should add that package, so that's हाँ, necessary. फिजिकल हेल्थ का तो हम ध्यान रख लेते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ का रखते ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। उसको भी तो चेकअप चाहिए। एग्जैक्टली, एंड आई वाज वेरी लकी कि मेरे माँ बाप को एटलीस्ट डिप्रेशन और एंजाइटी में विश्वास था, और किसी चीज में नहीं है, ना एडीएचडी में, ना ऑटिज्म में, उन सब में नहीं है विश्वास उनको, ना डिसलेक्सिया में। इन सब में से किसी चीज में विश्वास नहीं है, बट थैंकफुली दे न्यू डिप्रेशन एंड एंजाइटी होता है, और उन्होंने कहा तुम डिप्रेस्ड हो, मैंने कहा मैं नहीं हूं, उन्होंने कहा तुम डिप्रेस्ड हो, तुम चल रही हो। So I was very lucky, but there are still so many parents in India, and I am saying this because I have met friends who are horribly depressed, like, and their parents are like, depression nahi hai, to you are just lazy, or you are just crying for attention, or all of that, like that word. And it is very sad that your child became vulnerable to you in this age where no one wants to be vulnerable. No one wants to be vulnerable to their parents. No one wants to uh, be burden on their parents, to be very exact. Uh, and they tried opening up to you. They tried saying, "Yeah, I don't think I'm mentally well, and I need medicine, and I need therapy, and I need that, so that maybe next year that I can be a better version of myself and actually work on myself." And then you say stuff like this, it breaks it breaks someone away. It just it's like cancer, it grows, and it grows rapidly, and it can come back as well. Relapse जैसे cancer में होता है, it relapses. So you have to constantly take care of your health, mental health, so that it does not relapse. क्योंकि next time it's worse. And first time वाली strategy इस बार नहीं काम करेगी. इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या-क्या रहते हैं जब अगर किसी को ये ठीक करना है? मैंने I did not take much therapy, but I was on antidepressants, worst medicine I've ever had in my life. एक दिन आप मिस करते हो, आप अगले एक हफ्ते तक मरने की कोशिश करते हो. It's that bad. But if someone wants to get better very quickly, like it's a much quicker process with, मतलब आप ठीक हो जाते हो, but फिर उससे डील करने के लिए you have to go with to therapy. So I would highly recommend therapy over medicines, but sometimes you need medicine. Sometimes it's worse, so much worse कि आप सिर्फ therapy से नहीं ठीक हो सकते हो. So you have to get medicine.
That was one of, like, my case was that. Yeah. लोगों को ये भी तो And लगता है कि वो अपने आप को फ्रेंड्स से सराउंड कर लेंगे अगर, तो वो बेटर फ़ील करेंगे, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी नहीं होता। वो और डिप्रेशन में चले जाते हैं। I think it also depends on the friends that they have. Like, I was very lucky with the people because they actually believe that I have depression. And then मेरा लड़कों की friendship ही है, मैं especially देखा है that men don't take mental health seriously at all. अगर किसी लड़के ने अपने friend को ये बोला, like I will tell you this very real example, अगर किसी फीमेल फ्रेंड ने अपने फीमेल फ्रेंड को ये बोला दैट आई वाज हरास्ड और आई वाज डिप्रेस्ड, एंड वो लड़की लिटरली दुनिया भर की सारी चीजें करेगी फॉर 1 week or 2 weeks or until their friend feels better, and she'll always have that in the back of her mind कि हाँ, she had something like this, so I have to be careful with these words, I have to be careful with these sentences. वो last time उसके साथ ऐसा हुआ था when she started feeling depressed, so this worked. So that is what female friendships are all about. It's about caring. So, and actually support system काफी अच्छा होता है उनका. When I saw, and male friends also do that for their female friends. I'm not saying male friends are bad. My male friends have, I've contacted them 3 a.m., 4 a.m. and cried to them, and they were very nice to listen to me. And if I ever said that I am feeling this or I am feeling that, they are there for me. I'm not saying that male friends don't do that, but I have felt that they do only for that their female friends, and they don't take the male friends' problems as seriously. If someone said that they have been harassed, अरे भाई तूने तो 8th में ही मतलब एकदम cougar पटाई एकदम cougar. That is the reaction that you usually get from males. अगर उसने कहा कि वो डिप्रेशन है, अरे भाई दारू पी ले ठीक हो जाएगा, सुट्टा फूकते हैं, चल फीड बनाता हूँ, एक एक क्लास फीड है, पूरा का पूरा डिप्रेशन ऐसे. So you don't need that. You actually need help. You need talking to. You need therapy. And जब it's not just that ना, जैसे कुछ PTSD के बाय प्रोडक्ट डिप्रेशन होता है, मोस्टली डिप्रेशन होता है, कभी ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, कभी एंजाइटी हो जाती है, so you need help. एंड जब आप इस तरह से किसी पे वो होते हो, अब किसी को किसी तरीके से आपने बताया, यू ओपनड अप, यू बिकेम वल्नरेबल, एंड देन ये रिएक्शन आता है. आई डोंट थिंक दैट एनीवन डिजर्व्स दैट रिएक्शन. आई डोंट थिंक आई वुड बी अलाइव इफ आई हैड दैट रिएक्शन. Like I remember I was dancing to, मैंने कहा था ना that September, like June July में I had my biopsy, and then I started on uh, like antidepressants उसी के तुरंत बाद, right, August के around I was on antidepressants, and September में I had that dance competition at AIDS. So उसमें I remember this line, and this line was specifically like dedicated to my friends. It was one moment I feel like nothing, like no one will notice if I were gone, but then when I hear you calling my name, I feel loved, I feel so special. Feel special to people that are around them, because if you don't feel special and you don't feel valued, then you won't feel like living. क्योंकि किसको रहना उस लाइफ में where no one wants you, or no one wants to, you don't feel special, or you don't feel loved, or you don't feel wanted. That is like normal human nature. जब भी किसी को भी ऐसा लग रहा हो, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। खाली रहता हर टाइम, जितनी बात Yeah. करनी हो, जो बात करनी हो, आप आ जाओ। मैं बैठा हूँ आप लोगों के लिए, जो भी देख रहा हो ये वीडियो। ऐसा नहीं कि मैं आपको जानता हूँ, नहीं जानता हूँ। आप आ जाओ, हम बैठ के बात कर लेंगे जितनी बात आपको करनी है। मैं भी हूँ, शुभांशी का पता नहीं, ये नहीं है। मैं इसे साइकियाट्रिस्ट का नंबर दे दूंगी. आई हैव वेरी गुड कनेक्शंस. हाँ, ये साइकियाट्रिस्ट का नंबर दे देगी आपको। हाँ, वो साइकियाट्रिस्ट मैं ही हूँ, इसका ये नंबर देगी। तो आप डायरेक्टली मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं बैठा हूँ आप लोगों के लिए, जिसको भी मतलब बात करनी हो, लोनली फ़ील हो रहा हो, या फिर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, तो आप बात कर सकते हैं मेरे से। ये नहीं कि आप मेरे को समझे, मैं बिज़ी आदमी हूँ, वीडियो नहीं बना रहा। आप लोग आ सकते हैं, गुड ठीक वन, है? गुड वन. हुँ,
और अगर आपको हील करना है इन सब चीज़ों से, तो एक यूट्यूब चैनल मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, तनेजा टॉक्स है, बढ़िया बंदा है। शुभांशी के द्वारा टेस्टेड है। Tried and tested for years. वो तो इसने मेरे को बाद में बताया कि ये थेरेपी मतलब ले रही है, वरना तो मैं पहले हील कर देता। आई थिंक सबको बस इतना पता था कि मैं पिल्स ले रही हूँ। हाँ, इसने बाद में बताया मेरे को ये सब। तो अब ये डिप्रेशन और हरासमेंट पे बात हो चुकी है। डिप्रेशन और एंजाइटी कैसे कोरिलेटेड है? डिप्रेशन और एंजाइटी वेल आई थिंक काइंड ऑफ कभी-कभी बाय प्रोडक्ट होता है उसका, मतलब जैसे एज आई सेड कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज दूसरे मेंटल हेल्थ इश्यूज से रिलेट कर जाते हैं, देन यू गेट I personally feel anxious around a lot of people because then someone can grab your anywhere in your body and you would not know कि कौन होगा, who is that person. And जब कम लोग होते हैं, then I am more scared because then the things can escalate to a larger level. So if there are 2 to 3 people, I'm scared. If there are multiple people, I'm scared. So इसलिए मैंने कहा ना, I need like appropriate amount of people and more women in my life. So that I can feel safe. I'm scared to go to Sarojini. मैं literally मेरे पीछे एक आदमी रहता है, मेरे आगे एक आदमी रहता है, मैं साइड साइड में 2 लोग रहते हैं, तब जाकर के मैं सरोजनी में एंटर करती हूँ. I am scared to go there and it's very scary. I just especially even if my friends are there and I like my teenage friends even. I'm a very touchy person. I hug everyone. But वही है ना कि if I'm in a crowd and if they are just touching me on my arms or any like on my waist so that they can direct me somewhere, I literally freeze. वो freeze is like so natural. कुछ लोग कहते नहीं है कि ओ तुरंत थप्पड़ क्यों नहीं लगा दिया भैया, फ्रीज हो गए, बॉडी हिल नहीं रही है, कहाँ से लगाए थप्पड़. बोलना आसान होता है ना। बोलना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है. Like बोलते it's तो बहुत ज़्यादा so आसान है। yes. So depression देखिए एंजाइटी इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट. हर किसी की डिफरेंट होती है, हर किसी की डिफरेंट रीजंस की वजह से होती है, हर किसी की डिफरेंट इश्यूज की वजह से होती है, हर किसी की डिफरेंट चीजों से होती है. कुछ लोगों को कुछ लोगों को एंशियस फील होता है दे हैव टू परफॉर्म, कुछ लोगों को एंशियस फील होता है दे हैव टू डू एकेडमिक थिंग, कुछ लोगों को एंशियस फील होता है अराउंड पीपल. डिप्रेशन और एंजाइटी कैन कोरिलेट अगर जैसे इफ यू आर डिप्रेस्ड अबाउट समथिंग सर्टेन एंड देन उसके साथ साथ कभी-कभी ऐसा होता है दैट ट्रिगर्स होते हैं. डिप्रेशन के भी ट्रिगर्स होते हैं, इट कैन गो वर्स एंड एंजाइटी के स्पेसिफिकली ट्रिगर्स होते हैं. So if you are in a depressive state and then something triggers you, so usually what happened to me was I could not breathe, so I had to like sit down, lie down, and actually मेरे पास एक पेपर बैग होता था तब. So I would like मैं सांस लेती थी उस पेपर बैग में so that I can calm myself down and like okay ठीक है कोई बात नहीं, it's fine, it's fine, it's fine. And then I would eat sweets because sweets have always been something that I relate to happiness or okay, okay sweet treats है तो किसी का birthday है, sweet treats है because something is happening, there is some festival, so I don't know. So I would say कि depression and anxiety से correlate कर सकते हैं because one thing can lead to another. Like if you are constantly anxious तो आप एक टाइम के बाद शट डाउन करना शुरू कर देते हो, right? You're constantly anxious about this thing, you're constantly anxious of what if, oh my god, this is so annoying. एक point ऐसा आया था that I would like started scraping here on and उसमें से खून निकलने लगा था and I did not realize. That is what anxiety does to you. Your mind shuts down, you start counting, you're like just keep breathing and breathing and breathing and breathing so that किसी तरीके से you have some sense left in you. Uh, it can lead to the other thing if not treated properly. इन सब चीज़ों में लोग अपने आप को हार्म करना कितना चालू कर देते हैं, या फिर मतलब अपने आप को हार्म करने लगते हैं लोग इन सब चीज़ों में, डिप्रेशन, आराम एंजाइटी। आराम से एंजाइटी में आई थिंक इट्स लेस.
I think it's completely less. I think anxiety is उतना नहीं होता है. But then again, I'm not a medical professional, so don't take my advice. मेरी personal anxiety की जर्नी है कि मेरे से नहीं हुआ था. But depression, yes. Sometimes कि आपका emotional pain इतना ज़्यादा होता है that you feel abandoned, you don't feel loved or something. It's just and actually आपको physical pain होने लगता है in your heart or somewhere anywhere. आपकी physically actually you start feeling pain like when I was very horribly depressed, मैं उस time बीमार भी थी and I saw this then I was so happy and so okay जब first few days थे because I was like कि okay कुछ नहीं होता सब ठीक हो जाएगा everything will be fine and then I started getting depressed and मेरी physical health tanked like actually tanked. I could not get up. I could not understand what the fuck is going on. Most time I started scratching myself. That is like very normal for me. I scratched my whole hand. It started bleeding. My whole legs they were bleeding. I tried to like suffocate myself with like dupattas of sorts so that इन सब चीजों पे मेरा ज्यादा ध्यान है मेरा दिमाग would go to this injury or to this injury or to this injury rather than whatever is going on here. Whatever is going on here. ये सब तो So मेरे से पहले बात से नहीं करना पड़ता। sorry. पहले बात कर लेती मेरे से तो ये सब नहीं करना पड़ता। बहुत बड़ी गलती पाशा भाई एकदम crucial mistake. कोई नहीं, आगे से ध्यान रखियो, ठीक है? Okay, okay. और जो लोग देख रहे हैं वो भी ध्यान रखना। Yes, please. And there are a lot of suicide hotlines. मैंने खुद 2-3 यूज किए हैं. So please just Google them and talk to them. मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। Yes, please. तो रिलैक्सेशन टेक्निक्स बताइए इन सब चीज़ों के लिए, एंग्ज़ायटी के लिए। I think बहुत different होती है सबकी अपनी-अपनी होती है but what I learned is like मैं तो I go in a corner and sit down like ज़मीन पे and I would go 1, 2, 3, 4 Marriott the Cottage. Or what I would do is like I told you na that I have like paper bag, brown paper bag. उसमें I breathe. Uh, I count. And one is this butterfly technique जो देखतेगा वो मुझसे कहेगा कि तुमने it's okay not to be okay से दिए नहीं मेरे therapist ने भी यही suggest किया था. It's like hugging yourself and it's like one and breathing in, breathing out, breathing in, breathing out. It's like you have to keep your breathing intact. ये जब एंजाइटी होती है ब्रीदिंग ही आपकी सबसे पहले इफेक्ट होती है आप हाइपर वेंटिलेट करने लगोगे अगर वो नहीं होगा तो यू हैव टू काम योरसेल्फ डाउन इसके लिए कुछ लोगों के लिए सेवरी स्नैक्स होते हैं कुछ लोग स्वीट यूज करते हैं कुछ लोग क्रैकर्स खाते हैं अलग अलग का डिफरेंट डिफरेंट अपना अपना होता है तो यू कांट रियली इट्स नॉट जनरलाइज टू वन थिंग बट यूजुअली काउंटिंग हेल्प्स फॉर मी सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट होता है इसमें भी? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है आई कांट स्ट्रेस बहुत इनफ with that. Um, like Navya, one of my very great friends of like 20 years, Navya has always been there. Even whenever I called or whenever I said, "Oh my God, I think I'm like going down or something is happening." Even when I went to one of her parties and I did not feel good, मेरे लिए अलग से एक कमरा उसने सीधा सीधा कहा था सबको कोई शिवांशी से बात नहीं करेगा कोई इसको परेशान नहीं करेगा I would go there, I would sit and I would calm myself and then I would come back. And then एक घंटे आधे घंटे बाद I would go back to that room and then calm myself and थोड़ा शांत हो जाती हूँ and then I'll go back to that. And also in school, college as well, I think I was very grateful for a lot of people, especially people from my theater society crafto. They were so nice कि whenever I used to have like one of these sessions or one of these anxiety because हम लोग बात भी हम लोग का जो उस टाइम पे टॉपिक था that was child rape very triggering so uh, so उस पे even when you are witnessing that it can so sometimes it becomes a little difficult so हम लोग वहाँ पर if I start getting there was Anushka Vinit all of these people would like उसको सांस लेने दो इधर मत करो कोई टॉफी लेकर के आओ they were so nice and even when I was in college
Shreya was there and she was very nice. She was ek bari I had this one episode and we were not friends. We were not we did not really like each other, but he still took me home, cooked for me, and I think I would forever be grateful. Same with Satya. She had like tuberculosis. She was coming to college, and I had an episode and मैं मेडिकल रूम में पड़ी हूँ and then Ayush and Satya came and they were like तुम्हें एंजाइटी क्यों हो रही है? So I was very lucky with people. You have to understand I was very lucky with such good support group that I have. I would call Vaibhav at the end of the day, in the middle of the night, कि ये हो रहा है, I don't feel good, and he would be like, ठीक है, सांस ले, टॉफी खानी है, टॉफी भिजवा. He is in back in Lucknow and I'm in Delhi, in Darshan. So yeah, I was very lucky with people and support absolutely matters because उनमें से एक भी like there was this one time कि मेरे friends ने एक system बना लिया था when I was very horribly depressed कि हर कोई 1-1 घंटे या 2-2 घंटे पे चेक करेगा. वो किसी ना किसी की कॉल हमेशा आती थी मुझे just to check how I am or if I have not done anything stupid. So yeah, it absolutely matters. It absolutely matters. And I was very lucky with people. I don't think anyone can be as lucky with people because even people who were my friends who did not even like me were very nice to me. And I don't think I can ever be more grateful to them. इन सब के बाद ट्रस्ट इश्यूज भी आते हैं. 100%, 200%, 300%, like because we we live in this day and age that you can cross search anyone. ठीक है. And क्या नाम है, you are scared of being vulnerable to your friends because what if they use that against you? You're scared of being making your friends. What if they think of you as a burden of sorts, or your emotional needs too much, or use that part of your life for their own gain, or to use that to make you feel guilty and then oh my god, I was there for you this time, why you're not doing this for me, why you're not doing that for me. And I think the most trust that you have breach of trust that you go through is you in your romantic relationships, because everyone has romantic relationships and everyone has been through like some sort of heartbreak, but it's worse when you have gone through something like that, because then you also tell your romantic partner कि ये मेरे साथ हुआ है, and then they use that against you, they use that to manipulate you, they use that to get into your pants. They use that, they use all of that. It's just so it is so bad, it's so bad. And when you finally trust someone and then they break that, because I think as I said, 98% of the women, you know how many percentage of pregnant women get murdered by their partners? It's above 60 or 70 ish. It's that bad. And most of the women who get murdered are murdered by their partners. Like most of the married women get murdered by their partners. That is above 50. So when you live with that information, you really don't want to trust someone, especially if you had a breach of trust that early in your life. मैं बहुत ज्यादा अंग्रेजी में बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है. नहीं वो तो कोई नहीं, मेरी ऑडियंस पढ़ी लिखी है. नहीं, हम चाहते हैं कि हम हिंदी में बोले, बट आई कैन डिसोसिएट विद, मतलब मैं अपने से थोड़ा एसोसिएशन हटा करके एक्चुअली ऑब्जेक्टिवली तभी बोल पाती हूँ व्हेन आई स्पीक इन इंग्लिश, बिकॉज दैट डज नॉट हैव मच इमोशन फॉर मी. हिंदी में बोलूंगी तो रोने लगूंगी, कांट डू दैट. वही सब चीज फील करेगी ना. कोई नहीं. तो ट्रस्ट इश्यूज का इम्पैक्ट क्या होता है एक बंदे पे? You cannot be normal. I remember I cried to my parents
please do something. I want to be normal. I cried to them that I just want to be normal. Just make me normal. Do something that I can be having like a normal life. You cannot trust people who will say you delay things. There are very less people who go with that. And honestly, uh, mm, just you cannot trust anyone. You just feel like someone is gonna use some because itna early on you had a breach of trust in your life. Itna early on as a child should always be protected. That what you have heard all your life, and when you were not protected, you feel like no one is ever gonna love you or like you, or you will never be enough, and you will always have someone who is like not gonna be there for you. And एक नए relations बनाना बहुत मुश्किल रहता है because you are always guarded. You have like 6 feet wall, पूरे Great Wall of China बनी होती है तुम्हारे आसपास, and no one wants to work that much to just be friends with you. And I think it's kind of fine because तब आप बहुत सारे लोग filter out कर देते हो, but it also makes sometimes makes you desperate and you overcompensate and you try making friends with everyone, and then you get hurt, and then it just depends on as I said, person to person depend करता है. I had a really good group of friends before that, तो उसकी वजह से I really never needed more people. So I would say that I was very lucky with like people, and thankfully I had Navya all along with me. So I never really felt the need to make more friends because I maybe almost puri needs khatam ho chuki thi uske sath. And I had other friends who were like absolutely like very wonderful people. Like I would say I was very lucky with people and very lucky with friends, not as lucky with my romantic endeavors. But I just say that that was lucky does not mean that you will also be lucky. Yeah. And also because ठीक है romantic endeavor में सबके सबकी लगती है. There is very less people who end up with their first love. तो क्या नाम है? It's just fine. It also like acts as a barrier. तो जो the people who want to have an easy connection and just go with the flow and never want to commit, आप उनसे थोड़ा दूर हो जाते हो. So it helps sometimes. The Great Wall of China kind of filters out the fun boys. हाँ, ट्रस्ट इश्यूज के लिए भी लोगों को थेरेपी लेनी पड़ती है. I think लेनी चाहिए भी, but it depends on the relationships. Like किस relationship के लिए आपको trust issue पे therapy मिलेगी? Like you can't trust your partner or you can't trust your friends or what, or, and if you can't just make a partner because of how much hurt you are. So it depends. Uh, अगर आप अपने पार्टनर को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो like 2 or 3 years, then it's a different kind of therapy. You need a couples counseling. But if you can't make a partner because of the trust issues that you have, then you need therapy on your own self. And why is that happening? Is it because you see some red flags and you just want to like, ignore them and just go ahead and be with that person because तुम्हें लगता है कि what everyone is experiencing a love and I cannot do anything? Or is it because you just don't want to be vulnerable? So बहुत सारी चीजें हैं. रिबिल्ड करना चाहिए. Sorry. ट्रस्ट को रिबिल्ड करना चाहिए. Obviously, I think depend करता है if someone has broken your trust एंड वो किस लेवल पे ब्रेक किया है. लाइक झूठ बोला है, झूठ तुमसे बोला है, किसी और से बोला है, झूठ किसी के बारे में बोला है, झूठ चीटिंग ऑल ऑफ दैट. सो इट डिपेंड्स कि वो जो ट्रस्ट तुम्हें खुद के लिए बिल्ड करना है कि खुद के ऊपर रिबिल्ड करना है या फिर तुम्हें अपने पार्टनर के साथ रिबिल्ड करना है. दोस टू वुड बी कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियोस. खुद के लिए रिबिल्ड करना है तो yes, 100%. Partner के लिए मैं नहीं recommend करती हूँ. Someone who is lying the first time will lie the second time. तो क्या क्या स्ट्रेटेजीज होती है ट्रस्ट रिबिल्ड करने की? Trust rebuild करने की I would say कि you have to believe in yourself to rebuild your trust. Like you have to trust yourself with decisions and your loved and close ones. Therapy, honestly, therapy.
और या तो फिर आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर सकते हो, which is you trust a person and then they cheat on you or they cheat with you or something of those sorts, like friendship में. Don't do that with relationships. But yeah, either you take a chance or you take therapy. But सबसे पहले you have to trust yourself and अपने अंदर trust rebuild करना पड़ेगा so that you can trust someone else. तो I ये would say थी that. आपकी और मेरी दोस्त शुभांशी, और ये कुछ हमने इन पॉइंट्स पे बात कर ली है, जैसे हरासमेंट, डिप्रेशन, एंग्जायटी और ट्रस्ट इश्यूज। अभी इसी तरह कुछ और टॉपिक्स भी बचे हैं मेरे पास, लेकिन ये एपिसोड लंबा चलता जाएगा, तो उसके लिए हम दूसरा एक एपिसोड बना देंगे, तब भी आ जाएंगे शुभांशी, और अगर हो पाए तो हम साथ बैठ के बना देंगे वो। हाँ, that would be lovely. तो तेरा क्या कंक्लूजन है आज के इस वीडियो से? मेरा हम्म। if something happens, shout it out. If you cannot shout it out, write it down. If you cannot write it down, then wait for some time and get it out of your head. Kuch time ke liye, and then work on yourself so that you can be better. And then take therapy. If psychiatrist works for you, do psychiatry. Take medicine. And then whosoever did that with you, उसकी चाय में जहर मिला कर उसको पिला दो. हाँ, और मेरा चैनल जो बंद होगा इस लाइन के बाद, किसी को मारने की Uh, एडवाइस देने को। नहीं, उसकी एडवाइस मैं दे रही हूँ ना. एंड ऑब्वियसली पाशा भाई के वेरी 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 नाइस चैनल कॉल्ड तनीजा टॉक्स, व्हिच आई थिंक इट इज one lovely channel. I loved your discussions with Krishna and other guests. So if you want to just learn about life और मेरी तरह वो गलतियां नहीं करना चाहते हैं, like तनीजा भाई से बात ना करके डिप्रेशन में चले जाना एंड थेरेपी लेने नोट की कर। नौबत पे आ, वो नहीं चाहते हैं, then you can definitely please subscribe to Taneja Talk. तो आप सबको मैं शुभांशी का हैंडल दे दूंगा इंस्टाग्राम का, उस पे ये डांस वीडियोस भी डाला करती हैं। अभी तो वो डांस वीडियोस कुछ वजह से रुकी हुई हैं, लेकिन वो दोबारा चालू हो जाएंगी आप लोगों के लिए। बस रिस्पेक्टफुल रह के कमेंट करना, वरना मेरे से ही यार पिटोगे। मैं लीगल चली जाती हूँ, just saying. हाँ, मेरे पे 2 And एफआईआर हो चुके हैं। I have destroyed a few great man's life. So lovely. तो Don't ध्यान be रखना disrespectful. चीज़ों का, और इस वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो। और अगर आपको कैसा भी फ़ील हो रहा हो, खराब फ़ील हो रहा हो, अच्छा फ़ील हो रहा हो, आपको किसी टॉपिक पे बात करनी है, तो नीचे मेरा इंस्टाग्राम मेंशन्ड है, मैसेज कर देना। ऑलवेज़ अवेलेबल फॉर यू गाइस। चलो, थैंक यू। थैंक यू शुभांशी। बाय। Thank you. Bye bye. Let's meet sometime. जल्दी।